just one agarbatti is good. Deepam dhupam namaha. All right, sankalp, pan leaf, flowers. We chant the sankalp, giving thanks to Bhagwan, seeking the blessings of Bholinath Bhagwan. ये हमारा आखिरी श्रावण सोमवार है, and we seek the blessings of Bhagwan Bholinath and all of you in your respective families. Om Hari Om Tat Satom Tat Satom Sri Hari Vishnu Hari Vishnu Hari Vishnu Nama Paramatmane Shri Puran Purushottamaya Shri Parameshwaraggyayam Adya Brahmane Dvite Paradhe Shri Shvedvaraha Kalpe Vaivasvatmanavantare Ashtavinashatitame Kaliyuge Kalipatham Charane Jambudvipe Uttreyamarka Kande Kanada Deshe Brahmtan Nagare Bhavani Shankar Mandare Aryavratam Targata Brahmavrate Kadese Vikram Shake Baudhavatare Varthamani Yathanam Samvatsare Shri Shubha Samvat 2080 Shri Nalanamabdah Samvatsare Shraavan Mase Shukla Pakshe Somvasare Trayadashi Tathoyam Uttrashadha Nachatraha Saubhagya Yoga Balokaran Ravi Dakshinayane Hevam Guna Visheshana Vishisthayam Shubha Punya Dine Sakala Sruti Smriti Pauranoktaha Phalpraptikamam Amuknam Yajmanasya Amukugotrasya. Take your right names, Janmanam, Nachadrashinam, Janmanam. Amukugotrasya Muksharmaham Sapparivarnam Adheyasya Muksharmaham Mamatmana Saputravandhavasya Shri Ganapati Bhagavan Pujanam Kalasthapana Varun Devata Asya Sri Shri Bhavani Shankar Mandare Shraavan Somvara Rudra Abhisheka Pujanam Garishye Namaha Bhavani Shankar Bhagavan Asya Sri Snanam Jatubhyam Namaha Gvam Abhishekam Sarvadeva Namaskaram Shiva Rudrashtakapata Shiva Chali Saha Sankirtanam Aratikyam Mahaprasadam Sarvadeva Namaskaram Pujanam Purvakam Nairujya Dirghayu Pushti Dhanadhanya Svidhyatam Navagraha Mukena Yache Iti Sankalpam. Place it in front of you. Om Swasti Vachan. Take grains now, petals. Swasti Vachan. Harihi Om Swasti na Indro Vriddhashravah Swasti na Pusha Vishwavedah Swasti no Sthariksho Arishanemihi Swasti no Brihaspatir Dadhatu Om Paya Pritabhyam Paya Oshadhisho Payo Dibyantarikshe Payodha Payaswati Pradisha Santu Mahiyam Om Vishnu Raratamasi Vishnu Snaptreshto Vishnu Surasi Vishnu Drovasi Vaishnavamasi Vishnavetavan Magnir Devata Vatu Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vaso Devata Rudra Devata Aditya Devata Marto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devata Indro Devata Varno Devata Om Dhyahu Shantirantariksha Shantihi Prithvi Shantirapa Shantiroshadayah Shanti Vanaspataya Shantir Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagvam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Sushantir Bhavatu Om Vishwani Deva Savitar Duritani Parasuva Yad Bhadran Tanna Asva Imarudraya Tavase Kapardine Kshayadviraya Prabhara Mahemati Yatha Shamasadvipade Chatushpade Vishwam Pushtam Grame Asmin Nanaturam Etante Deva Savitar Yagyam Prahur Brihaspataye Brahmane Tena Yagyamavatena Yagyapatim Tena Mamava Om Mano Jyotir Jushatan Majasya Brihaskatir Yagyamimam Tano Tvarishtagam
यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवा सैहमादयं तामोगं प्रतिष्ठा एष वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ति सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवतिम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहं जानी गर्वधमा त्वं मजासि गर्वधम् नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॐ सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैतानि नामानि यापते चुनियादपि विद्यारम्भे विवाहेश्च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये इति स्वस्ति वचनम् ॐ गं गणपतये नमः। Take some petals, फूल अपने हाथ में ले लो और अभी हम now we'll start भगवान गणेश जी पूजा। बोले गणपति भगवान की जय। ओम गम गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। मूषकवाहन मोदकहस्त चामरकरुणा विलम्बितसूत्र वामनरूपः महेश्वरपुत्र श्रीविघ्नविनाशन पाधारं नमोऽस्तुते। महागणपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। ओम गम गणपतये नमः। Take some petals, throw it in front of him again. आवाहनं समर्पयामि नमः। गुमासनं समर्पयामि। Just take the water alone. Throw 4 spoons of water on Ganesh Ji Bhagwan. पाधयो पाधयामि नमः। अर्घयो अर्घयामि नमः। मुखयाच्मन्यं समर्पयामि नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। Take the towel, just wipe him out gently. He had lots of bath today, so we give him a little less bath. बोले गणपति भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमः। यज्ञोपवीतिधारयामि नमः। Red thread. ओम महागणपतये नमः। यज्ञोपवीतिधारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतं जदुभ्यं नवाभिसन्तु विद्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् ओपवीतं चोतर्यं गृहाण परमेश्वरः। गन्धं धारयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। चन्दन कुमकुम। ओम श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाधं सुमनोहरं विलेपनं सुरासृष्टः चन्दनं प्रतिगृहतां गन्धं धारयामि नमः। ओम कुमकुमं कामना दिव्यं कामना कामसंभव कुमकुमेनाचिते देवा तथा शान्तिं प्रयक्ष मे गन्धं धारयामि नमः। अक्षतां समर्पयामि। Sprinkle a few grains in front of Ganesh ji. अक्षताश्चासुरासृष्टां कुङ्कुमुक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। महागणपतये नमः। अक्षतां समर्पयामि नमः। पुष्पम अर्चनम। Petals along with your dubgrass. We do archana to Bhagwan Shri Ganesha. Om Sumukhaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Kapilaye Namaha. Om Gajakarnakaye Namaha. Om Lambodaraye Namaha.
ॐ विकटाय नमः, ॐ विनायकाय नमः, ॐ विघ्नराजाय नमः, ॐ धूम्रकेतवे नमः, ॐ भालचन्द्राय नमः, ॐ गजाननाय नमः, ॐ वक्रतुण्डाय नमः, ॐ शूर्पकर्णाय नमः, ॐ हेरम्बाय नमः, ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः, ॐ सिद्धिलम्बोदरमः गणपतिस्वामिने नमः। पुष्पं दूर्वां चतुभ्यं समर्पयामि नमः। ॐ दीपं धूपमाग्रापयामि नमः। ॐ अगरबत्ती। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पुरोतदस्व यद्वैषां पद्भ्यागं शूद्रो अजायत धूपमाग्रापयामि नमः। ॐ दीपं दर्शयामि चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि नमः। ॐ धूपदीपनिवारणाय नमः। नैवेदयामि नमः। ॐ प्रसाद नैवेदयामि नमः। ॐ शर्कराघृतसंयुक्तं मधुरं स्वादुचोत्तमम् उपहारासमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेदयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नैवेद्यं समर्पयामि नमः। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। आचमन्यं, sprinkle the water. आचमन्यं समर्पयामि नमः। ताम्बूलफलं समर्पयामि नमः। पुगीफलं महादिव्यं नागबलिदलैर्युतम् एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ताम्बूलफलं दक्षिणां जदुभ्यं समर्पयामि नमः। द्रव्यदक्षिणां जदुभ्यं हिरण्यगर्भः समवर्ददाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधारभृतविन्ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। दक्षिणां जदुभ्यं समर्पयामि। आरातिक्यं समर्पयामि नमः। आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता झांकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता झांकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लदवन को भोग लगे संत करे सेवा। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता झांकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देख कोरियन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। भव से पार करो नाथ भजन करो तेरा। लदवन को भोग लगे संत करे सेवा। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता झांकी पार्वती। जो तेरा ध्यान करे ज्ञान मिले उसको। छोड़ तुझे और भला जाऊं मैं किसको। हे देवा कृपा करो कष्ट हरो मेरा। लदवन को भोग लगे संत करे सेवा। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता झांकी पार्वती पिता महादेवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेव, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। प्रार्थना। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवार्णं तथाष्टमं, नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर, न चाविघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रां, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासी फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नास्ते संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसीदता। हे भगवान जी, कृपया हमारे प्रार्थना और भक्ति स्वीकार करें। हमारे भक्तों को लंबी आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। भगवान, प्लीज एक्सेप्ट आवर प्रेयर्स एंड डिवोशन and bless our devotees with long life and happiness. Gajananam bhutaganaadisevitam kapittajambo phalacharubhakshanam umasutam shokavinashakarakam namami vigneshwara padapankajam. Vakratunda mahakaya suryakoti samaprabha निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति भगवान की जय। ओम कलश पूजा। ओम कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रा समाश्रिताः, मूले तस्यास्ते ब्रह्मा मध्ये मातृगणस्मृताः, कुक्षौ तु सागरा सर्वसप्तदीपवसुन्धरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो सामवेदो यतर्वण, अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। 3 बार, 3 times bow। ओम वं वरुणाय नमः ध्यायामि, नमः आवाहयामि, आसनं समर्पयामि, नमः। 4 times, take water, throw on top of the coconut। ओम पाधयो पाधयामि, नमः। अर्घयो अर्घयामि, नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि, नमः। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि, नमः। ओम वं वरुणाय नमः यज्ञोपवीति धारयामि, नमः। Piece of red thread on top। ओम मानस्तो केतनये मानो आयशो मानो घोषो मानो अश्वेश्वरीरिषा
मानो विद्राविरान रुद्रभामिनो वधीर हविष्मन्ता सदा मित्वा हवामहे। ओम वस्त्रं यज्ञोपवीति धारयामि नमः। चंदन कुमकुमं चतुभ्यं चंदन कुमकुम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टा करिष्यनीं ईश्वरी घुं सर्वभूतानां तामिहो फह्वये श्रियं गंधं धारयामि नमः। अक्षतां समर्पयामि नमः। ओम वं वरुणाय नमः। अक्षताश्चां चतुभ्यं नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। अर्चना, अभी हम अर्चना करेंगे। प्लीज टेक फ्लावर्स। वी ऑनर द ग्रेट नेम्स ऑफ भगवान वरुण जी। ओम वं वरुणाय नमः। ओम वं प्रचेतसे नमः। ओम वं स्वरूपिणे नमः। ओम वं अपां पतये नमः। ओम वं जलाधिपतये नमः। ओम वं पाशहस्ताय नमः। ओम वं अकर्मणिभूषणाय नमः। ओम वं वरुणाय नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम धूपदीपनिवारणाय नमः। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धार्यो गन्ध उत्तम आग्रह सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपमाग्रापयामि नमः। ओम दीपं दर्शयामि नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः दीपं दर्शयामि नमः। ओम धूपदीपं नैवेदयामि प्रसादं नैवेदयामि नमः। ओम शर्कराघृतसंयुक्तं मधुरं स्वादुचोतमम् उपहारासमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृहताम्। ऑफर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा नैवेदयामि नमः। ओम वं वरुणाय नमः। आचमन्यं समर्पयामि नमः। ओम वं वरुणाय नमः। ताम्बूलं समर्पयामि नमः। पुगीफलं महादिव्यं नागबलिदलयुतं ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलफलं दक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तधाग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत् सदाधारप्रतविन्ध्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेमं। दीपं ओम नमो मकरवाहनाय पाशहस्ताय वे नमः। नमो प्रचेतसेनाय त्वं वं वरुणाय नमः। जम्बकाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात्। दीपं दर्शयामि निराञ्जनं समर्पयामि नमः। ओम वं वरुणाय नमः। प्रार्थना। ओम वरुण भगवान को प्रार्थना। Pray to the Lord Varun Dev, the Lord of the oceans, and ask that all the elements in all of us, Chitta Jala Pavan Gagana Sharira, let the elements be balanced, and let us always stay in a balanced life. Om Devadanava Samvade Matyamano Mahodadav Utpano Satada Kumbho Vidhrito Vishnuna Swayam त्वतो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि तितां त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवस्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिम् आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका सानिध्यं कुरु मे देवा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम वं वरुणाय नमः। हिरण्यसिंहं वरुणं प्रबध्यं तीर्थं मे देहि याचिता यन्मया भूक्तं साधुनं पापे भयश्च प्रतिग्रह यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्ना इन्द्रो वरुणो बृहस्पति सविता च पुनन्तु पुनः पुनः। बोले वरुण भगवान की जय। तीर्थराज भगवान की जय।
उमापति महादेव की। अभी भगवान शिव जी और पार्वती माँ का अभिषेकम शुरू करो। We'll now start a abhishekam ceremony of Bhagwan Shiva and Ma Parvati. Shrotas, please bring your arti with a few petals inside. Because it's so many of us, it will be hard for everybody to be on the stage. We wouldn't see. So when it is time to arti, I will call all of you on the stage to do arti on Bhagwan Ji. In the meantime, please come stand in front. Bole Shankar Bhagwan ki Jai. Om Namah Shivaya. 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 Vande Devam Umapatim Suragurum Vande Jagat Karanam Vande Pannagabhushanam Mrigadharam Vande Pashunam Patim Vande Surya Shashanka Vahnanayanam Vande Mukunda Priyam Vande Bhakta Janashrayancha Varadam Vande Shivam Shankaram Shantam Padmasanastam Shashidharamukutam Panchavakram Trinetram Shulam Vajram Chakadgam Parashubhavayadam Dakshinange Mahantam Nagam Pasham Jaghantadamaruk Sahitam Chakusham Vamabhage Nanalamkarayuktam Sphatikamananibham Parvatisham Namami Sambasara Shivaye Namaha Dhyayami Avahayami Asanam Samarpajami Namaha Om Asanam Samarpajami Namaha Om Namah Shambhavaya Chaham. We have everything. Play. Knock, knock. Om Mahasambasada Shivaya Namaha Bhavani Shamkaro Vande Shraddha Vishwasya Rupinam Yabhyam Bhinana Pashyante Siddha Swanta Tameshwaram Bande Bodhamayam Nityam Guru Shankara Rupinam Yamashrito Hi Vakro Api Chandra Sarvatya Vandhate Maha Annapurne Sada Purne Shankara Prana Vallabhe Jnana Vairagya Siddhyartham Bhiksham Dehi Chaparvati Mata Chaparvati Dev Pita Deva Maheshwara Bandhava Shiva Bhaktasya Sarvana Bhuvaneshwara Bhavani Shankar Shivaya Namaha Har 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 Namah Parvati Pataye Har 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 Mahadev Shambho Samba Sada Shivaye Namaha Om Vidyudhyam Samaprabham Mrigapatim Kandastatam Bhishanam Kanyabhikharvala Keta Vilasadhasta Virase Vitam Hastaye Chakragada Vishikam Chapam Gunam Tarjanim Vibhranamanalaatmikam Shashidharam Durgam Trinetram Bhaje Om Bhavani Shankar Shivaya Namaha Bhavani Shankaraya Namaha
Bhavani Shankara Shivaya Namaha. You guys come up now. Om Namah Shivaya. 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 ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नां पद्मासीतां समस्तास्तुतिर्मर्गनो व्याघ्रघृतिं वासनं विश्वाध्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम शंभवे नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं, get the empty lota, put it there. उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां रुद्रं मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे भुवन सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्योर्मोक्षयमामृतात्। भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इसवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां उदते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्या यात मृतया नो रुद्रमृतय। याते रुद्र शिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्तर्विभर्षस्तवे शिवां गिरत्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत। शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावधामसि
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं समना असतम् अध्यवोचदधिवक्तां प्रथमो देव्योऽभिषक अहीगस्य सर्वान् जन्मजन् सर्वासयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मङ्गलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रुताः सहस्रशो गैषागुं हेद ईमहे यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रपञ्च धन्वनस्तमभयोराट्नियोज्यां याक्षते हस्त इषवः पराता भगवो वपम् अवदत्यधनस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निशील्यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्य शव आभुरस्य निसङ्गतिः या ते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वहस्तमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाय न तथाय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मा वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमस्तस्मिञ्जराय त्वशीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुजाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतरे पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो हिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिचाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नम उच्चेद्घोषाय कृन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्तवीताय धावते तत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्त्रिकाभिभ्यो जिह्वागुं सभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उश्रीशरे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नम सपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो सपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यस्सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यस्सङ्ग्रहेतेभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जेष्टेभ्यो वो नमो नम इषकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यः शनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः सपतिभ्यश्च वो नमः
नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेधुष्टमाय च सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आश्रये द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः शोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च श्रवाय च नमः आसुसेनाय चासुरथाय च नमः सूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्बिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्तुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः स्तुत्याय च पठ्याय च नमः काट्याय च लेप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो श्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईद्रियाय च कप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नम उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पाद्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः स्तुत्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च पवार्याय च नमः हिरण्याय च पपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हृत्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः याय च ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमोपगुर्मानाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमिवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेद्मा रोमो येषां किञ्चनामवत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृतजीवसे हिमागुं रुद्राय तपसे कवर्दिने एकसजद्वीरार्भरामहे मथिं यथा नः समसद्युपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृदानो रुद्रोतनो मजस्कभीक्षजद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयो च मरुराज चे पिता ततस्यामतव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधिः पितरं मोतमातरं प्रिया मानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आदिशि मानो गोषु मान अश्वेश्वरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो बधिर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पौरुषग्ने सजद्वीराय नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्छति बर्हा आह तुहि सतं गत्तसदं युवानं मृगन् भीममुपहत्नुमुग्रं वृता चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव पन्तु सेना आह परिणो रुद्रस्य हेतिर्विनक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामगवर्भ्यस्तनुष्यमीढुस्तोकायतनयाय मृदय मेढुष्टमशिवतमा शिवो नः सुमना भव मे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान
आचरपिनाकं बिभ्रदागहि विकिरीटविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्यमस्मिन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानु भगवः पराची नामकाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्नवे एन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवासिति कण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवासिति कण्ठादिवगुं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवाभिलोहिताः ये भूतानामधिपतयो शिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिनः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावृतस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु ते यं दुश्च च नो द्वेषितं भोजं भेदधामे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टि यस्य सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा आमहे सो मनसाय रुद्रं नमो ओभिर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे सजो यगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो माभिशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवो ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नेर्वाचेभिरागतं वाचश्च मे पशवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे भीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे सृजश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च आधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परुगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यञ्च म आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्रघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे वसश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिष्यमानञ्च मे सूक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथञ्च मे रिद्धञ्च मे रिद्धुश्च मे क्लप्तञ्च मे क्लप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे यस्यश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विष्टञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूसा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सून्द्रता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुच मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृशश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म ओभिध्यञ्च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवा आश मे माशा आश मे तिला आश मे पुत्काश्च मे खल्वा आश मे गोधूमा आश मे मसुरा आश मे
प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वता च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तर्वश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म औषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्या च मे पशव आरण्या च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे तुष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्विनो च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे देवश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसश्च मे रश्मिश्च मे राभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंसश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदेयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्टश्च मे पाटलीपदश्च मे हार्ययोजनश्च मे इत्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धृष्णिया च मे सृगश्च मे चमसा च मे ग्रावानश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभने च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधिवनीयश्च म आग्नेयेध्रञ्च मे हविद्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडासाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दतिश्च मे द्यौश्च मे चक्वरी लङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष मे सामच मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे रतश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रिविश्च मे त्रियवी च मे दित्यवा च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवा च मे तुर्यौही च मे पष्ठवा च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वसा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मे नड्वा च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां ज्ञानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाचश्च प्रसवश्च पिचश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च व्यस्नियस्यान्त्यायनस्यान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ इडादे बहुर्मनुर्यज्ञनि बृहस्पतिरुक्थामदानि सगुंसि सद्विश्वे देवासु उक्तवाच पृथिवी मातर्माहि गुंसि मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभाये पितरोऽनुमोदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धना मृत्योर्मोक्षयमामृतात् अथ रुद्राभिषेकम् जय हो नमो बिल्वने च कविचने च नमो हरिः ओम final washing. No, we're finished halfway now. All right. अर्घ्यं गृहामि देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह कर्मे देवानाम् अर्घ्योऽयं सोमनाथं च. अच्छा, Nandi, come on. Okay, guys, निधनपतये नमः. ॐ निधनपतये नमः. निधनपतान्तकाय नमः. ऊर्ध्वाय नमः. ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः. हिरण्याय नमः. हिरण्यलिङ्गाय नमः. सुवर्णाय नमः. सुवर्णलिङ्गाय नमः. दिव्याय नमः. दिव्यलिङ्गाय नमः. भवाय नमः. आय नमः. शर्वाय नमः. शर्वलिङ्गाय नमः. ये नमः. ज्वललिङ्गाय नमः. आत्माय नमः. आत्मलिङ्गाय नमः. परमाय नमः. परमलिङ्गाय नमः. एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पानिमन्त्रं पवित्रम् सज्जो जातं प्रबध्यामि सज्जो जाताय वे नमो नमः. भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः. वामदेवाय नमो. ज्येष्ठाय नमः. श्रेष्ठाय नमो. रुद्राय नमः. कालाय नमः. कलविकर्णाय नमो. बलविकर्णाय नमो. बलाय नमो. बलप्रवृत्तनाय नमः. सर्वभूतदमनाय नमो. मनोमनाय नमः. अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानां ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो महे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योन्मोक्षे यमामृतात् भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालग्निकालाय कालग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः भवाय च मयः शङ्कराय च शङ्कराय च शिवाय च शिवतराय च सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् कं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् कं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् ओ हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकाय पते उमापतये पशुपतये नमो नमः यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मोक्षे यमामृता हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपते अम्बिकाय पते उमापतये पशुपतये नमो नमः हर 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 महादेव शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलमाङ्गलम् जय
जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला सब चोर जन है किया। ये दुनिया पंछी का मेला सब चोर जन है किया। तन मन साथ नहीं जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तन मन साथ नहीं जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मनोबुद्धहंकार चित्तानिनां न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। मनोबुद्धहंकार चित्तानिनां न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे। न च व्योम भूमे न तेजो न वायु। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञा न वे पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपाष्टपायु। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो। मनो देव मे देव मात्सर्यभावा। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। चिदानन्दरूप
भोग्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदो न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोग्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्युर्न शङ्खं न मे जातिवेद पिता देव मे देव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्धहंकार चित्तानिनाहं न चाश्रोतजिह्वे न चाघ्राणनेत्रे न चाव्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं बोले शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Everybody, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Today, before we start our satsang, we want to acknowledge, I want to do the hard work first and the noble work first, which is to thank our generous sponsors. As you know, the temple is run 100% by devotees of our community, and we want to extend sincere gratitude to all of them for being part of our celebration. Today, I think we have 15 sponsors, a lot of them online. All the greetings are online, so I don't have to read every line of what is happening. I would like to just acknowledge all of them. Our virtual sponsors, Babita Singh and family, Auntie Daris and uncle, Anuradha Indal, celebrating her birthday from New York, Rego Park, thank you. Tanarayan Rajnarayan, thank you, Bhagwan's blessings. Malika C. Kumar, our devotee of the temple, wishing everyone blessings of Shivji. Eileen Basdale, in memory of her dearest mom, Chandrauti Basdale. And also Mitra Budram, wishing everyone the very best of Bhagwan Shivji's blessings. Those will all be posted online as the service goes on today. In person today, we want to thank the following Shrotas and their family. Lisa Jamwanti and family, a devotee of our temple. Our sincere gratitude to Mahadev, Bhagwan, for his continued blessings and guidance. Thank you, Lisa and your family. To our Bharatiya family, Prakash, Vidira and family. Prakash ji, kaun hai? Ek Prakash ji? Prakash ji, Vidira and family. Bahut dhanyavad. Thank you very much for being our Shrota today as well. And Ravish Kumar Patel ji, bahut dhanyavad. Bholenath Bhagwan आशीर्वाद हमेशा आपके पास और आपके परिवार के साथ रहेंगे. Or also our dear sister and volunteer of the temple, Chahat Pasricha. She's at Chahat is somewhere. She's at the back there. There we go, Chahat. Thank you. Chahat is a volunteer of our temple, one of our receptionists.
Bhagwan's blessings always. Chahat to you and your family. And today as well from Sarah and Yadav Singh. They're celebrating their 9th birthday of their son, Shankar. Happy birthday, Shankar. Bhagwan's blessings to you always. 9 years old is a big deal. It's the year before the double digits, so congratulations. Of course, to Dara Rajpal, and my dear sister Nirmala Lakshmi and their family. For all 8 Mondays, they have been shrotas at the temple for Shraavan Mass. We'd like to ask Bhagwan Bholinath's blessings on them. They're tremendously hard workers for our temple, and we ask that the Lord always bless them and their family, of course. To Ganesh and Vidya Singh, Vidya is celebrating her birthday today. Happy birthday to you, Vidya, with lots of best wishes from your family, from Ganesh and Gauri, and all of us here at the temple. God bless you always. And of course, to my dear sister, Nandi, and her husband, Krishna Dutt, or Naresh Dubey, and their lovely children, Tamesh and Priya. Today, they are celebrating their 29th wedding anniversary. Please give them a big hand. I reminded her how young I was when she got married. I was just 16 years old. Now, I'm sure you're trying to calculate how old I am with your fingers. All of you know I'm 45 years old. But I was very young when my sister got married, and I couldn't be there for the wedding because she came to Canada. You know the long-time people, right? My mom asked the boy. That time we referred to him as the boy. Asked the boy, when the gal get through, then we're going to set wedding date. Gal not come just like that. And I remember, you know, back home is a big deal when you get immigration papers in the village. A big deal for you. So she was a teacher back home. My sister was a teacher. And I received the immigration papers in the mail. And I was so bad. I was so bad. That time I was wearing short pants, so I rode my bicycle to the school. And I showed up at her classroom when she was teaching, and I was like, Nandi, you didn't get through. I had the envelope in my hand. I'm like, she's like, why you bring the message to me at school? You could have waited until I get home. I said, no, you didn't get through. And I was like, real acting, you know. It's like when I go to the hospital and I need attention. Oh gosh, oh yeah. Yeah. No, you see, when I go to the hospital and I have a headache, oh boy, the whole hospital know, because I have a way of letting them know. So when I told her, you're gonna get through, she was like, oh. And she was so sad and she was in tears. And she cried, you know. She and I are not too far off in age, so she come and she hugged me and she said, what are we going to do now? What are we going to do now? So I says, it's okay, look for yourself, what they said. Look for yourself. And then she opened the paper. I was 16 years old. Imagine, I was a great prank. And she opened the paper, and there it was. Congratulations and welcome to Canada. Oh my God. Can you imagine what went through her mind? So, and then of course, we celebrated. And then, after then, the wedding was fixed. Only then, book flight, and she came. And, you know, I don't speak about my family a lot because you have to understand, you don't want to be charged with nepotism and thing. But, you know, my brother-in-law, she came to this country, and she, in my opinion, she is married to a God who is walking on this earth, and that's my brother-in-law, Naresh. He has done so much for me in my life, and so much for my sister. And even to today, she does not, you know, she does not show it a lot, but she goes through a lot of pain in life. And up to this day, he's a pillar of support to her in every way. So, God blessings to Naresh for his. He doesn't have to pretend. That's who he is. A very genuine and kind, very kind human being. And for me personally, he's done so much for me in my life when I came to Canada. And I'm so grateful for that. So happy anniversary to you both. Next year is 30 years. So we got to celebrate big
Please give them a big round of applause. And let's not forget, they have two lovely children, Priya and Tamesh, who are here as well, adorable kids. I have to remind Priya sometimes that I babysat her when she was little, and I changed her diapers too when she was little. And watch Barney all day with her. So, God bless all of you. Bole Shankar Bhagavan ki Om. Bole Mahapati Mahadev ki Jai. पंडित शेखर जी हमारे पंडित जी हैं, वो भारत से आया, बहुत विशेष आश्रम से आया, हमारे गोपाल चरण जी के आश्रम से आया। बहुत विशेष आश्रम से आया पंडित शेखर जी, और विद्वान हैं, बहुत अच्छा कर्मकांड पंडित भी है। और ये पंडित शेखर जी का नया घर है, भवानी शंकर मंदिर। हमारे भारतीय लोग बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, इसलिए हम पंडित जी से स्वागत, प्लीज़ गिव पंडित जी वार्म वेलकम। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पंडित जी आप 2 मिनट हमारे भारतीय लोग और हमारे लोग एड्रेस करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भगवान शंकर भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकर भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे भवानी शंकर में विराजित सभी देव प्रतिमाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस मंदिर में विराजमान हमारे प्राण से भी प्यारे पंडित जी महाराज को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तजनों के और जो भी हमारे भवानी शंकर मंदिर में उपस्थित हैं सभी भक्त वृंद को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हम लोग पूरे श्रावण इसी तरह जैसे आज आपने देखा भगवान जी का अभिषेक, प्रथम दीपक पूजन, गणेश जी पूजन और कलश पूजन करते हुए भगवान शंकर जी की अभिषेक और श्रृंगार, सबके एक एक, कोई ऐसा नहीं है जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर नहीं भी है, सबके हाथ से दूध चढ़ाना, सबके हाथ से प्रसाद चढ़ाना और सभी को एक बाई एक करके सबको प्राथमिकता दे करके लाइनबद्ध भगवान को अर्चन सेवा सब इस मंदिर में सबसे बढ़िया प्रावधान बना करके पंडित जी ने ऐसा व्यवस्था बनाया है कि इसमें कोई संशय नहीं है। लोगों को ये भावना है कि ये गयानिज मंदिर है, पता नहीं वहाँ क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा है कर्मकांड के लिए, भगवान के सेवा पूजा के लिए कोई यहाँ भेदभाव नहीं होता। आप लोग अधिक से अधिक भारतीय लोग आएँ, वेस्ट इंडीज लोग तो सब आते ही हैं, भारतीय लोगों के लिए विशेष हम आग्रह करते हैं। हम यहाँ हैं, दूसरे पंडित जी भी इंडिया के ही हैं और पंडित जी स्वयं यहाँ होते हैं। तो आप लोग
हमेशा संध्याकालीन या सुबह में जब भी आप लोगों का टाइम मिले आइए, दर्शन करिए। और कभी विशेष पूजा करना हो आप लोग कर सकते हैं, यह आपका मंदिर है, ठाकुर जी आपके हैं और हम लोग ठाकुर जी के हैं। यही भावना सदैव हृदय में रखना चाहिए, इसी से हमारा जन कल्याण है। यही दो शब्द बोल के आप लोगों को फिर से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक भारतीय लोग इस मंदिर में पधारें और इस मंदिर का शोभा बढ़ाएं। आप और हम सब होंगे जब भी तो शोभा बढ़ेगा मंदिर का, नहीं तो खाली मैं अकेला फिर तो भूत बंगला हो जाता है। इसीलिए अधिक से अधिक भारतीय लोग आएं, दर्शन करें। समय समय भगवान जी का इसी तरह जैसे आज आपने अभिषेक किया, एक बाई एक कर करके सबको प्राथमिकता मिलता है। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ। पंडित जी आगे सत्संग करेंगे। कोई हिंदी में समझ नहीं आती हो, दो शब्द हम बोलते हैं ऐसे जैसे आज बोला, बाकी कोई किसी प्रसंग में बोलेंगे। आप लोग आएंगे जब भी ना, आप लोग कोई आओगे नहीं तो फिर बोलने का कोई फायदा नहीं है। बाकी तो सब इंग्लिश वाले ही हैं, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए भवानी शंकर भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। शंकर भगवान की जय। शिव जी चालीसा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग बनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तल शाल लगाए। बस काल बाघंबर सोहे, कवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल करत सदा शत्रुन क्षय करी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर माध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम आओगे गणराज, या छवि को कही जात लगा। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुआरी। तुरत शरण आप पधारहु, लव निमेष महामार गिरायहु। आप जलंधर असुर संहारे, यश तुम्हारे विदित संसार। त्रिपुरासुर सम युद्ध मचाए, तब ही कृपा कर लीन बचाए। दिया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुखुरारी। दान न मह तुम सम को नाई, सेवक
स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई। अगत अनादि वेद नहीं पाए, करती उदरी मंथन में द्वारा। जरे सुरासुर भय बिहारा, कीन दया कह करी सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना। जीत के लंका विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी। तीन परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई। कमल नयन पूजन चह सोई, भजन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए चितवरे, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भ्रमत रहे मोहि चैन लागे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो। यही अवसर मोहियान पारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहियान पारो, मात पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी। आयह रहूं अब संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाई। जो कोई जाचे सो फल पाई, स्तुति के निविधि करो तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन। विघ्न वेद विनाशन, योगी मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए। तापर होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी। पाप करे सो पावनहारी, पुत्रहीन इच्छा कर कोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे। अंतवास शिवपुर में आवे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी। जानी सकल दुख हरऊ हमारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण कीन कल्याण। मग सरचती है मंत्र ऋतु, 64 योगिनी ज्ञान।
पात चालीसा शिव की पूर्ण कीन कल्याण। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहम्। ओम नमः शिवाय। Everybody. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं तुषारातिशं काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालभाले कन्ते भुजङ्गा। ओम नमः शिवाय। Everybody. ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मझं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूरनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यम्। ओम नमः शिवाय। 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 शंभो ओम नमः शिवाय। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवारराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिनाथ।
Om Namah Shivaya. न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽहं जराजन्म दुःखोगतातप्यमान प्रभु पाहि आपं नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शम्भो Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Sabhi Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Chandrasekharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo. Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Har Har Haraye Namo, Har Har Haraye Namo, Shiva Shiva Shivaya Namo, Shiva Shiva Shivaya Namo, Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Gangadharaye Namo, O Gangadharaye Namo. Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, O Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo, O Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo. Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Chandrasekharaye Namo, Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo. Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, Om Namah Shivaya Namo, O Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo, O Gangadharaye Namo, Gangadharaye Namo. Sabhi ko, this is the darshan of the Lord on Shraavan Somar, on Pradosh Tithi. We ask Bhagwan Ji's blessings on all of you, your respective family and friends. May you always be guided and protected. May Bhagwan Shankara's protective hands always be with you. Whenever we do devotion to the Lord, then He allows love, He allows peace to always live within us, so that our man, our tan, our vani, everything can become pure and we can uplift others in the process. Om Atma Tvam
गिरिजामति सहचरा प्राणाशरीरं गृह पूजाते विषयोपभोगर्चना निद्रासमाधिस्तति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्व गिरा यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वाकायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमे तक्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो हर हर Mahadeva, Har Har Mahadev. Just the Shrotas, one family, come and bow to the Lord and then go back. Bring a flower, whatever you have. After that, we'll sit down. Har Har Mahadeva, Har Har Mahadeva, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Har Har Mahadeva, Har Har Mahadeva, Har Har Mahadeva, Har Har Mahadeva, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva Shambho, Mahadeva, Shiva Shambho, Mahadeva, Shiva Shambho, Mahadeva, Shiva Shambho, Mahadeva, Gangadhara Shiva, Gangadhara, Gangadhara Shiva, Gangadhara, Gauri Priya Shankara, Gauri Priya Shankara, Shiva Shambho, Mahadeva, Shiva Shambho, Mahadeva, Damaru Baja Shiva, Damaru Baja, Ho Damaru Baja Shiva, Damaru Baja,
भोले शिवा शंकरा, भोले शिवा शंकरा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, हर भोलेनाथ शंभो, हर गौरीनाथ शंभो, 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 शिव शंभो महादेवा, everybody, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो, it'll fall from there, I know, put a chest, महादेवा, ओम नमः शिवाय, 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 शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेवा, शिव शंभो महादेव, शिव शंभो महादेव। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। भवानी शंकर भगवान की, अन्नपूर्ण पार्वती माता की जय। बैठिए, बस 10-15 मिनट बैठिए। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ भगवान की। एवरीबॉडी, ओम त्र्यंबकम टुगेदर यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षेयमामृतायतयो मृत्योर्मोक्षेयमामृता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव शंभो दीनों के बंधु नमो नमः नमो नमः। भगवान शिव जी दीन बंधु है. He is the friend of all of us. We may not be friends with everybody, but please rest assured, you are never short of a friend when you have Mahadev with you. शिव शंभो दीनों के बंधु नमो नमः नमो नमः। गिरिजापति गंगाधर हरिहर नमो नमः शिव नमो नमः। शिव शंभो दीनों के बंधु नमो नमः नमो नमः। गिरिजापति गंगाधर हरिहर नमो नमः शिव नमो नमः। Everybody, भालचंद्र त्रिपुरारी सुख कर वरदानी नीलकंठ साजे त्रिपुंड ओ हरदानी। ओ भालचंद्र त्रिपुरारी सुख कर वरदानी नीलकंठ स्वाजे त्रिपुंड ओ हरदानी। भव भयहारी असुरारी शिव नमो नमः नमो नमः। गिरिजापति गंगाधर हरिहर नमो नमः शिव नमो नमः। दम 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 रू नीलाद से जग डोले नृत्य करे नटराज उमा संग भम बोले। ओ दम 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 रू नीलाद से जग डोले नित्य करे नटराज उमा संग भम भोले। शूल पानी कल्याणी शंकर नमो नमः। गिरिजापति गंगाधर हरिहर नमो नमः
शिव नमो नमः शिव शंभो दीनों के बंधु नमो नमः नमो नमः गिरिजापति गंगाधर हरिहर नमो नमः शिव नमो नमः शिव नमो नमः शिव नमो नमः ओ शिव नमो नमः। बोले शंकर भगवान की। आज हमारे शिव जी का दर्शन है कालियानाग शिव जी का दर्शन चाहिए ना। भगवान श्री कृष्ण भी, इफ यू नोटिस्ड द लास्ट few days, Bhagwan Shri Krishna has been coming for the darshan of Bhagwan Shivji. And the alankar you see here is the alankar. The alankar that you see here is Bhagwan Shri Krishna dancing on the head of Kaliya, and beside Kaliya and Shri Krishna, of course, the two sides are the wives of Kaliya, Nagrani. We will tell this story in our Bhagavad Katha next week. But as you know, Bhagwan Shri Krishna, Vande Mukunda Priyam. Vande Mukunda Priyam. We bow to Shivji, who is the beloved of Shri Krishna Bhagwan. Agar Shivji Bhagwan upasthit nahi hai, to if the Lord Bhagwan Shivji is not present, the Katha of Bhagwan Krishna cannot commence. The Katha of Bhagwan Ram cannot commence. If Hanumanji is not present there, no Katha can commence. Aas aiye ke asana lijiye siya sahit Bhagwan. Right? This is the love and the beauty of our Satya Sanatan Dharma, where love and respect is given to everyone, regardless of your achievements, of your position, and everything else. Kaliya Darshan is very, very special Katha in Bhagavatam. But today all you know is that Kaliya has come to see Bhagwan Shivji. Kaliya is a snake, so he has no fear of Shiva. Shivji is a magnet. Shivji Bhagwan is a magnet that attracts every form of creation. He is not a magnet, you look at him as a stone, you will think only of his kind that he will attract. No. He attracts the snakes, he attracts the cows, he attracts the Devis, the Devatas, and everyone he attracts. But most of all, today we focus on the greatest bhakta of Bhagwan Shivji, and that is Ma Parvati herself. Ma Parvati, today is the last Somvar, the last Monday of Shraavan. This Pavitra Shraavan, 8 weeks ago, we started daily pujas in this temple. 8 weeks ago, every day, Panditji performs daily. Any evening you could have come here 6 o'clock and witnessed Rudra Abhishekam and chanting of Mahimna Stotram and Rudrashtakam to the Lord. Pandit Shekharji has done a fabulous job. I think we all need to give him a big round of applause. Every single day, in any case, in this temple and many other temples, well, I can only speak for our temple, Shivji Puja is not only a Shraavan affair. Rudra Abhishekam is not only, it's an every day that is done here. But in the month of Shraavan, a little extra effort is placed. Today, technically, it's all coming to an end in a few days. 8 weeks, and the last month, of course, every single day of satsang here in this temple. So Bhagwan Shivji must always bless all those who have attended, who have sponsored, whether it is a bag of milk you bought, or a flower you have bought, or a pan leaf, or bhojan, or whatever. Those who have fed and sponsored bhojan in this period of Shraavan, you have no idea. But you see, people don't care about blessings these days because they don't see it, right? You see interest in your bank account, you see assets growing, but you don't see blessings. We take blessings for granted. We take this pranic energy that we are breathing for granted, not knowing that this prana that we are breathing is Atma Tvam Girijamati Sahachara
prana shariram griha. This very prana that we breathe is the Lord Himself. This body is the house, griha is the house of the Lord Himself. So all those who have taken time to come out each evening to give thanks to Bhagwan, it has been very, very energizing, very tiring, but very energizing. If anybody would tell you to do this for a job, I don't know. But we do it because it brings so much love when we do it. Today, we celebrate the love of Ma Parvati. The love of Ma Parvati. Parvati was born for Shivaji. She was born for this. But not because we were born with a gift means we're going to be gifted. No, no, no. You know, there was a time when people used to take presents to a wedding. When you get married, they used to take presents. You didn't have to sign up and so on that time. You didn't tell people what you want. Whatever they brought, you took. And most cases, they bring glasses and plates and all that kind of thing. And when the reception or wedding is over, half of them broke up. So there was a time when people used to bring these things for weddings. Glasses, mugs, vase, and everything else. I remember when we came, Sita and I came to Canada 22 years ago when we were married here. We did a little puja, people bring a little box and thing. And you took it home and you just stuck it under something. You know, it's under something. And then when you move, you put it under the stairs. And then when you move under the stairs, you put it in the cold room or something. Because you know it's here, glass and boxes and everything. So what happens now? You need a vase for your home. And you're like, you know what? Let's go buy a vase for our home. And you go and you buy a vase for your home. And then you say, you know what? Some people are coming over. We need some new plates. Let's go buy some new plates for our home. Because, you know, when people come, just like back home, you drink water, or when people come, you have to buy Cokes for them. Right? You have to buy drinks. You have to treat your mehman, Bhagavan, ke jaise. So you buy some new plates. Then you buy some new cup. And then when you realize you get everything new. But then one day you had nothing to do. And you go now and you start to open the boxes. I'm telling you because I'm telling you from experience. You start to open the boxes and say, Hari bhai, look a beautiful vase I had for my wedding gift 10 years ago. It's still here. But wait a minute, I buy all these plates and I have plates. I have cups. And everything you have stored there, but you never opened. Has that ever happened to anybody? I'm sure not nobody, only me that happened to. But that's fine. The point is, आपके पास सभी है, इतनी सारी तोहफा है, जन्म से. From birth, we have so many gifts. People tell you you're gifted. All of us are gifted. All of us are gifted. The point is, हमारे तोहफा एक box में है. Our present is in a box. You have to open the box. You have to open the box. And when you open the box, you will see how much of richness you have inside of you. Not everybody, sometimes you sit there, you say, you know what? I don't want to do this anymore. I want to be a pandit because, you know, Pandit Harat, things work out for he nice. But then what happens? You will find that no matter what you try to do, you will not be successful. You know how many times I wanted to be a fixer? I wanted to cut a nail and hammer and everything. And one time I was building a small room and I called the carpenter and I said, give me an estimate. He said, $1,500, everything. I said, no, I'm going to build it cheaper. So I went and I bought tools to buy it cheaper and I bought $2,000 tools to fix a $1,500 estimate room. We all think that we are special, but we are born with a gift. I will never become a mechanic. I will never become a fixer because I don't know about, I was not born for that. I was born for this. This is it. I know nothing else but this. You as well. You were born with a gift. Try discovering your gift and live that gift. Don't live another person's gift. Live your gift. And that's very, very important. You can sing. You can't sing, fine. Sing for yourself. You can dance. You can't dance for yourself. Whatever it is, explore your gift. Mata Parvati was born for Shivji.
She was born for Shivji, and when she was born, when she came into this world, because the Devi is not born, Naraji came, and Naraji says, Kaha muni bihasi good mriduvani, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी मुनि ने हंसकर गूढ़ और कोमल वाणी कही। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या मैना और हिमाचल, तुम्हारी कन्या सभी गुणों के खान है, यहां स्वभाव से ही सुंदर सुशील और चतुर है, और उनका नाम उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। Narad ji came and he looked at the daughter, the little baby Parvati, choti si kanya Parvati. He looked at the little baby Parvati and says that your daughter is gentle, but she will be forceful and strong. She'll be forceful and strong. She is the mine of all virtues. She's beautiful. She'll be intelligent. And her name will be Bhavani, Ambika Bhavani. Nowadays, before a child is born, a name is already given to that child. ये ठीक नहीं है भाई, ये ठीक नहीं। जन्म से पहले कैसे हो सकता है? How can you name an unborn child? After the child is born, the sanskars are performed. Shri Krishna Bhagwan in the Bhagavad, when he was born, they perform Shraad and so on. Then they give him his name. Krishna, you have to come to Bhagavad. I hope all of you iron your saris already, and your kurtas already, and your shawl and everything to come to Bhagavad Katha from Wednesday, because we're going to talk beautiful stories. Narad ji came and he named the baby Parvati. और हमारा बेटी का गुण, यहां कुमारी तब सुलक्षणे के संपन्न है, यहां अपने पति को सदैव प्यारे होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, और इसके माता पिता इसके द्वारा यश पावेंगे. So he describes now who her husband is going to be and her character. She will have all fortunes of life. She will win the unfailing love of her husband. Her happiness will be firm as a rock, and she will bring glory to her parents. You know, जब शादी के समय है, हमारे विवाह के पद्धति में एक स्टेप है शील आरोहण. शील आरोहण. When we're getting married, the Panditji do a step called Sheel Arohan. No? Anybody know what Sheel Arohan is? What is it called? Rock climbing. But not on the wall or in the mountains. They put a stone in front of you. Long ago, it was a lorha. They put a stone and the bride will put her foot on it. You know what that means? That means this. Her happiness will be firm as a rock. Patthar ke jaise. No? You know, in a home, all of you know this. You know, without happiness, it's just a little structure. Naraji says her happiness will be firm as a rock, and she'll bring glory to her parents. All you children, there is only one goal that you have in life. Yes, it is to look good and to have all the things, but the one goal you should never ever lose sight of. Bring glory to your parents. Make them proud. That is the meaning of putra and putri. To bring glory, to bring happiness to your parents. When our parents cry, wipe their tears. Hug them. They are not always happy. Hug them and wipe their tears. And let them know that when you were little, they used to wipe your tears. And when you are grown, the parents are grown with pains and emotions, they will wipe your tears as well. We have to do that. This is the role of a child. This child of yours, Parvati, she will bring her parents glory, na? और इनके माता पिता इसके द्वारा यश पावे, fame. They'll make you famous. Now, what kind of person, what kind of wife she will be? Ehi kar naam suri sansara, triyacharahi pativrat asidhara.
And of course, she will be सारे संसार में इसका नाम स्मरण कर श्रियो पतिव्रत्य रूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी. This is the blessing of Narad Muni, that anybody who thinks of her, any woman who thinks of Parvati in their life, they will be strong as a mountain, and their faith will be sharp as a sword. No? When women, women are very, very devoted people. I've been practicing this priesthood 30 saal se. 30 years now I've been a Panditji. My sister is here. I was a Pandit. I can't remember a time when I wasn't a Pandit. I used to play Pandit when I was little. And every time you see in a home, somebody wants to do something, they want to elevate in their faith or spirituality, Dharmapatni, it is the wife who makes the effort to do that. Because men think wife have to pray for them, right? Anyways. So, Naraji says, okay, that's about your daughter. Maina Devi says, no, thank you. Are Sadhuji, tell us about her husband. What is her husband going to be? Naraji ne kahta, oh yes, I forgot. Naraji was not going to do it. Naraji says, he is going to be the king of the world. Everybody happy? He's going to be the Lord of all, Sabke Malik. Everybody happy? Everybody's going to bow to him. Everybody happy? Maina Devi's, mother is very happy. Lekin ek baat hai. He will dress literally naked. Maina Devi says, what? But okay, if he's walking naked, fine. Where will he live? What will his palace be? Big palace? Little home? Are Narad ji ne kaha tha, na. Ghar nahi hai, kuch nahi hai. So where is he living? Are shmashan mein rehte hain. He is living in the cemetery. What kind of a son-in-law do you want? Is there any girl here? Koi ladki hai hamare beech mein? Who would want to marry a man who is living in a cemetery? I think the first thing you ask the boy is, does he have a house? Does he have a house? Is there any girl here who would marry a boy who lives in the cemetery? No. He doesn't have clothes? No. Well, when they heard this, they say, Bapre, Naraji, let us erase all of this. Please do some puja and change her faith. Because we think puja can do everything. Naraji ne kaha ki, kaha muni himavant suno, jo vidhi likha lilar, devadadud naranag muni, koi namet nihar. Naraji says, what have you asked me to do? Naraji, please do some puja so she can marry a good, handsome husband so all this can erase. Naraji ne kaha tha, kaha muni se himavant suni. Listen, Himavant, Munishwar Naraji ne kaha ki hai Himavant, suno, Brahma ne nalaat par jo kuch likha diya. Brahma ne nalaat par jo kuch likha diya. Whatever Brahma Bhagwan has written in the fate of all men when they were created, kuch likha hua diya hai. Use mitane wala, devata, danav, manush, nag or muni, koi bhi nahi hai. Whatever is written in our fate, no devata, no God, no naga, no kinnar, nobody can erase it or change what is written for you. We can deal with it very differently. We can deal with it differently, but we cannot change the course of fate. You can't stop if it's going to rain tomorrow. You can't, that is how it is. It's going to rain. But you can get an umbrella to deal with the rainfall. You can stop the fact that the sunshine is going to be hot, but you can put on some sunscreen and whatever it is, your little umbrella hot, deal with the heat. Naraji says, nothing I can do will remove this from happening. Final chaupai, Parvati Mata grew into a little girl. She became a teenager. She understands now her fate. She says, I cannot escape it, but what I'm going to do, I'm going to pray about it. I'm going to do some tapasya. She quit everything. She goes up in the mountain. She stops eating. She stops drinking. The mother now becomes very agitated, and the mother goes and prays.
तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करही संहारा, तप से शूधरे बहि मारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तप असि जिय जानी, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायु गिरी हंकारी, मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चल उमा तप हित हर्षाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. A child now is going to go pray. And when our children are going to pray, we must never distract them. We must encourage them to pray. Puja is very important in life. Prayer is very important in life. You may be too young to understand this aspect of puja and prayer, but just do it. You know, today we chanted Rudram. Some people will ask sometimes, because 99.99999% of people, which is 100% of people, don't understand the meaning of mantras. You know that. We chanted the Rudraman Chamakam. Sometimes our people, Pandit, what does it mean? Kya matlab hai? What does this mean? What is the explanation? Namo Bhagavate Rudraya. Can you, maybe we'll connect to it a little bit more? No. Don't try to understand the meaning of these things. When we chant the mantras and the vibrations are there, enjoy it. But your mind have to be there. Enjoy it. We communicate in this world not with a language. Listen to this. We don't communicate in this world with language. That's what you think we're hearing. We communicate to the divine and to the creation with sounds. Sound. You go out in the morning and the birds are chirping. You know, and you go in your backyard and you sit down. Just try it. It works nice. The birds are chirping. And they're chirping, and some of them go chirp, 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 and some of them start again. It's like an orchestra, all of them doing different things. Then you feel so good. You feel so nice. You don't understand what they're saying, but they're chirping so nice that you just understand, that your song to make you happy. You go to the lake and the water is flowing, and you sit and you close your eyes and you just hear the water falling. You feel good. You don't understand what the water is saying, but you feel good about it. You go into a forestry place, the breeze are blowing, maybe like Naimisharanya. The breeze blowing, the trees are making a noise because of the wind. You just enjoy the coolness of the breeze and the sound of the trees. You don't know what they're saying. It's a sound. It makes you happy. You don't understand what does that mean, but you feel good about it. Right? You feel good about it. Similarly, sadhana, mantra, puja. When the Panditji, Namo Hiranyavahave Senanye Dishanjapataye Namo Namo. You know, it makes you feel good, and after a while, you know, you enjoy it. The same is for prayers. You may not understand what you're doing, but still do it. Tapabal. Meena Devi told her daughter, my daughter, go and pray to Shivji. क्योंकि तप के बल से ब्रह्म संसार रचते हैं और तप के बल से विष्णु सारे जगत को पालते हैं. तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं. It is because of tapasya, prayers, that Brahma creates. It is because of tapasya that Vishnu preserves. Is it because of tapasya that Shivji samhar kare, he destroys? It is because of tapasya that Sheshnag holds the earth on his head.
तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी कि सारी सृष्टि का आधार तप है। जी में ऐसा जानकर तू जाकर तप करे। In fact, the entire creation, O Bhavani, rests on penance. Bear this on mind, go do penance. To all of you who have come here day after day, evening after evening, I know all of them who come, and do Monday after Monday on a summer evening to have come to do tapasya, you have no idea of the rewards of life. We're not concerned about the rewards, that will happen, but the Lord's blessings will always be with you. You take one step to God, the Lord take 10 steps towards you. And of course, Ma Bhavani, Ma Parvati, her penance to Shivji was immense. She gave up food, she gave up leaves, she became Aparna. Aparna is such a beautiful name. So many beautiful names we have as Hindus. Aparna means one who has given up dry leaves even. She's leafless. And of course, through this Katina Bhakti Dekhi Prabhu Shankar, Bhaye Prasanna Diye Ichitavar. The Lord becomes very pleased and He will bless us. I conclude tonight. I don't want to talk more, but I want to thank you on behalf of Bhavani Shankar Mandir, and we want to say that we're very happy that you are here to celebrate Shraavan with us. Hamara Bharatiya log, our brothers and sisters from India, they're coming more and more now, and Pandit Shekhar ji is very friendly, and he makes a lot of beautiful relationship. Please, as he said, ये गायनीज मंदिर है, ट्रिनिडाडियन मंदिर है, भारतीय लोग मंदिर है, फिजी लोग मंदिर नहीं है, पंजाबी मंदिर नहीं, ये सत्य सनातन धर्म हिंदू मंदिर है. Everybody is welcome to pray here. We speak Hindi, we speak English, we speak Guyanese. Our Indian brothers and sisters, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है ना कि गायनीज क्या है. गायनीज जैसे भोजपुरी है तो थोड़ा सा ब्रोकन हिंदी है, तो ये हमारा गायनीज भाषा है. बहुत मुश्किल भाषा गायनीज. It sounds like English, but it's broken English. So here we speak Hindi, we speak English, we speak Guyanese, and I can speak some Trinidad too, boy. I know my way around the road, you know, around the corner. I can speak some Trinidad too, because we have our 1-2 Trinidad family who were here. 1-2 Trinidad people who were here. And we have to be very, very thankful to them when they're here. Boy, because they're so scarce, you know. They're so scarce. They only follow the Trini people and thing, boy. But we're so blessed to have them here. So we're very, very thankful for all of your presence. I want to thank the children who worked here for the last 8 weeks as volunteers. Late nights they're here. They're all here sitting in different form. Well, not different forms, in their own form, but in different places, right? They inspire me to do so much more. And tremendous love and shout out to all the children who worked hard. Late nights, you know, late nights they're here because it takes a lot to prepare. But Bhagwan's blessings to all of them. Please give them all a big round of applause. It's very hard to call their names, but they know who they are, and I know who they are. And most of all, Bholenath Bhagwan know who they are. I want to say a very special thanks to our decor team. Please give them a big hand as well. For the past 8 weeks, 8 Mondays, and the last month they've been here. They're busy people. We all are very busy people, but their devotion is admirable. And I know all of them. You know them. They have left their children from vacation. They're here. They go. You know, we cannot have unrealistic expectations from our volunteers. They're people. They need to relax. They need to go away. I'm the only one tied to him, you know. But that's fine. We will deal with that later. But to all our volunteers, sincere thank you to the decor team for their very, very hard work. I want to thank our 2 new young bling aunties, Anjali and
Bhumika. So all the blings, our dear sister Nirmala used to do all the blings on the cutouts, but they have taken it on. It takes hours and hours and days to do these things, little by little. So I want to thank them very much for their devotion to the temple. Please give them a big hand. To all our lovely people who do cleaning, to Kant and Angela, who's not here, they come in daily to make sure that the place is tidy. Big thanks to them. To our musicians, to Navin, to all the other musicians, the children who come here every day and do kirtan and singing. It's not easy, but we are very blessed to have all of them. Big thanks to all of them. To our Panditji, big thanks to Panditji for his hard work and dedication. To our core team of the temple, our board, who are here, but who are always very supportive of everything that we do. We want to thank them as well for the vision and their support to help make this happen for all of us. And to all our Shrotas, I look at your name every day, and I'm so grateful. We are so grateful as a temple for all that you do. So thank you so much for everything. And we hope and pray that we'll bring this to a grand conclusion in the next week. Starting tomorrow is 11 Hanumanji Chalisa as well. Hanumanji Chalisa 11 times. All of you come. For the last 3 weeks we've been doing this. Tomorrow we're chanting 11 again, starting at 6:30 in the evening. And another good thing, afterwards we have bhojan, dal, rice. We forget what the thing Darshini is cooking tomorrow. She's preparing bhojan for everybody. Dal, rice, bhaji, something. So come on out, everybody, and we'll have bhojan afterwards. And then Wednesday, our Mahayagya starts outside. I would like to invite all of you to please become a devotee. Come on and sit every evening. Finally, I'll say, people are asking, who is Bhagavad for? Bhagavad is for everybody. Bhagavad is for everybody. Bhagavad is for the happy, the sad. Bhagavad is for the dead, especially for them. You'll hear the story of Dundakari. Don't be afraid. People are telling you all kind of crazy things, that you have death in your family, you can't come pray. Bhagavad is especially for those who have lost in their life. The first night we will talk about that on Wednesday night. Come on out. You will find peace. I'm telling you. There's not a lot I can guarantee you in life, but you will find peace when you come to Bhagavad Katha. If it's possible, please become a sponsor. You can become a virtual sponsor. Make a donation to the temple, and we will, of course, acknowledge you. We'd like to have your support more and more at the temple. This is how we operate. We don't sell any shares or anything to survive. When the month is up, we have bills to pay, and your love, it is through your love and support that we do this. That is why you come here, you find so much love, because you have helped to build all of this. I know I'm talking too much, but I'm going to close off now, and we're going to sing a bhajan afterwards. I'm going to ask the Shrotas to please go up first. They have to offer their prasadam. They've prepared their prasadam. And after they offer the prasadam, their tambul and dakshina and thing, everybody else will join on the altar. Please do not leave without eating bhojan. Everybody, we have nice Guyanese bhojan prepared. So we'd like you to stay back and have some bhojan afterwards. Bole Shankar Bhagavan ki jai. भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो। हे भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो। भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो। हो भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो। चिमटे की आवाज सुनकर गणपति चले आते हैं, छोड़ के अपने परिक्रमा और चिमटा में रम जाते हैं। चिमटे की अमृत बरसाया करो,
प्यार वाला चिमटा बजाया करो, भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो, ओ प्यार वाला चिमटा बजाया करो। चिमटे की आवाज सुनकर कृष्णा चले आते हैं, चोर के अपने बांसुरी और चिमटा में रम जाते हैं। चिमटे की आवाज सुनकर कृष्णा चले आते हैं, चोर के अपनी बांसुरी और चिमटा में रम जाते हैं। चिमटे की अमृत बरसाया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो, भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो। अरे भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो, भोले बाबा मेरे घर आया करो, प्यार वाला चिमटा बजाया करो। ओम नमः शिवाय, 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 अरे ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। When the shrotas are finished, everybody doesn't have to get up at the same time. When they're finished, everybody will go. जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, भोले जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी। निश दिन तेरा ध्यान करे हम, सिमरे मंत्र तिहारा, निश दिन तेरा ध्यान करे हम, सिमरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर मंत्र जगावो, होवे घट उजियारा, शंकर मंत्र जगावो, होवे घट उजियारा। नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, नमामि शंकर, कृपा करो त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी,
शंकर भगवान की
शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्कर रूप महेश्वर ॐ शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्कर रूप महेश्वर ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्कर 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 ॐ का प्रिय शिव शङ्कर ॐ का प्रिय शिव शङ्कर ॐ कैलाश प्रिय शिव शङ्कर ॐ कैलाश प्रिय शिव शङ्कर ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्कर 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 ॐ नत जन प्रिय शिव शङ्कर ॐ नत जन प्रिय शिव शङ्कर ॐ नतराज प्रिय शिव शङ्कर ॐ नतराज प्रिय शिव शङ्कर ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्कर रूप महेश्वर ॐ शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्कर रूप महेश्वर ॐ शङ्करा शङ्करा शिव शङ्कर रूप महेश्वर ॐ शङ्करा शिव शङ्करा शिव शङ्कर रूप महेश्वर ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्कर 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 ॐ शङ्कर 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 ॐ सामसरा शिव सामसरा शिव सामसरा शिव हरे शम्भो सामसरा शिव सामसरा शिव सामसरा शिव हरे शम्भो
शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिनागी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम हरे हरे महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषभावन साजे ओम जय शिव ओंकारा ओम हरे हरे महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे स्वामी दस भुज ते सोहे तीनों रूप निरखकार तीनों रूप निरखकार रघुबर जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा ओम हरे हरे महादेव अक्षमाला वरमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मन सोहे चंदन मृग मन सोहे भाले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे स्वामी बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा ओम हरे हरे महादेव करने श्रेष्ठ कमंडल चक्र शोधरता स्वामी चक्र शोधरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ओम हरे हरे महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक स्वामी जानत अविवेक प्रणवाक्षर के माते प्रणवाक्षर के माते
शिव हरि ओम शिवाय ओम शिवाय 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 हरि ओम शिवाय घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता स पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणी सर्वसार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। बोलिए भवानी शंकर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, बाल मुकुंद भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सियवर रामचंद्र भगवान की, सूर्यादि समस्त नवग्रह देवताओं की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, विघ्न विनायक गणेश जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की, शरणेश्वरी माता की, सरस्वती मैया की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, संध्या सैनम आरती की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगौ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सुशान्तिर्भवतु मङ्गलं भवतु। Please give me 1 minute of your time. Please be seated. Very importantly, we like all helpers who can help. Pack, sweep, do things. If you can come out tomorrow evening to give us a hand. We have Hanumanji Chalisa here from 6 o'clock till about 8:30. And then please come on out and let's sing Hanumanji Chalisa 11 times, bring 11 fruits, 11 flowers and so. Come on out. But we need helpers tomorrow. The guys will be doing their work in the tent. They have to make the stage and do their work and thing. But we need a lot of helpers to move things, fetch this, sweep out here. Lots of little things to do. We have carpet to vacuum, a lot of things. So please come on out tomorrow evening and give us a hand. After satsang at the temple, we will be here for a very long time in the night doing work. So if you can come, please come. We guarantee you, you will not be hungry. You will have food to eat. So that's a guarantee, right? Darshini is going to feed everybody nice tomorrow. So please come on out tomorrow and help us. Secondly, tonight bhojan is sponsored by my sister, Nandi, and her husband, Naresh, and their family. She's actually prepared a lot of the bhojan from her home. Being a patient that she is, prepared the bhojan from her home and bring it. And Baiji Umesh help with some cooking. So please enjoy her bhojan, and we ask Bhagwanji to bless her and her family for providing bhojan for her stomach here on a Monday evening. Thank you very much to all our sponsors. Thank you to everybody. Please, before you leave, we have special Charnamrit for you. Bhagwanji, Panaji, Charnamrit, ye curtain ke piche hai. Anil, can you help? Pandit Anil will give this is Charnamrit that came from Shivji, from the Lingam that we did Abhishekam on. And Panchamrit Abhishekam, so please have some of it. And also Panditji will give you prasad. It's important that prasad come from Panditji ke haath se. So whatever we give you, take prasad, that's important. And go downstairs and have bhojan. Bholenath Bhagwan ki Jai.